बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए सेकेंड ईयर के इंग्लिश बुक 2 जिसके कंटेंट में पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है। पार्ट 1 में इन्होंने कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक, और पार्ट 2 में इन्होंने हीरोज़ दिए हुए हैं 11 से 16 तक। आज हम पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो एक्सरसाइज के हैं। पार्ट 1 में से 9 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इसी तरह पार्ट 2 जो है उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टेक्स्ट बुक वाले शॉर्ट क्वेश्चंस है ये मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ एक्सरसाइज की। अगर आप कहेंगे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना लूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, और वाई डू द स्टार्स नॉट कम क्लोज टू ईच अदर। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तब भी आपने यही आंसर लिखना है, और अगर पहले वाला क्वेश्चन आएगा तब भी आपने यही आंसर लिखना है। आंसर है, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1,000,000 miles between two stars in space. That is why the stars travel in complete loneliness and the star seldom finds another star near it. Question number 2. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? Or what happened when a wandering star came near the sun? Answer. As the wandering star came near the sun, it raised an immense tidal wave on its surface. This tidal wave formed a high mountain. Before this star began to move away, its tidal pull had become so powerful that the mountain broke into pieces. These small pieces are the planets of our solar system. Question number 3. What happened when the wandering star came nearer and nearer? Answer. When the wandering star came nearer the sun, it raised an immense tidal wave on the surface of the sun. As it came nearer and nearer, the mountain-like wave grew higher and higher. Its tidal pull became so powerful that the mountain was torn into pieces and formed our solar system. Question number 4. What are the planets and how did they come into existence? Or how did our Earth come into existence? Answer. The planets are the broken pieces of the sun which revolve around it in the fixed orbits. They came into existence as a result of the explosion of the mountain of molten mass on the surface of the sun. Our Earth is one of the pieces broken off the sun due to that explosion. Question number 5. Why is there no life on stars? The stars are far too hot for life to exist on them. We may think of them as a collection of fires scattered through space. Life needs suitable physical conditions for its appearance. Since there is a temperature of thousands of degrees on the stars like the sun, life cannot exist on them. Question number 6. Write a note on the beginning of life on the earth. Or when and how did life start on the earth? Or how did life come into being on the earth? Answer. The easiest is not sure how, when or why life started on the earth. It probably started in the simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. These organisms brought forth a stream of life which became complex gradually. In the end, it produced human beings. Question number 7. Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. Or, why is the universe of which our earth is a part so frightening? Answer. The universe is frightening because of its immense distances, stretches of time that we cannot imagine, our extreme loneliness in space, the littleness of our home in space, and the fact that life like ours does not exist anywhere else in the universe. Question number 8. What, in your opinion, should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Or, why do we come to believe that life can exist only on a planet like the Earth? Answer. The kind of life we know on Earth needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is the temperature at which substances can exist in a liquid state. Since such conditions do not exist on other heavenly bodies, life cannot exist on them. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।